चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने 9th में पढ़ा था कि एक्सिस जो होते थे, ये हो गया एक्स एक्सिस एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज एक्स एक्सिस and vertical axis is known as y axis. So this one is y, negative side y dash x and x dash. So because of these two axes, the whole plane is divided into four parts. First part is known as the quadrant 1. In the same way, second quadrant anti-clockwise, opposite of clock. Third quadrant, and last one is quadrant number 4. So this one is known as the origin, and the coordinate means the x-axis at the origin is 0 and y-axis is also 0. So when we move in first quadrant, the value of x is positive, y is also positive. In the second quadrant, x is negative, y positive, and in third quadrant, x and y both are negative. When we move to fourth quadrant, x is positive and y is negative. So when a point A lies on x-axis, so x coordinate will be some numerical value while y coordinate will be 0. Now in the same way, if a point lies on y coordinate, suppose point C, and then we will get x as a 0 and y having some value. And now if you want to find the distance between these two points, that means distance between the point A to C. So we will use your distance formula. So while we are calculating the distance, we have to write the coordinate of point X as a x1, y1, and point C as a x2, y2. Now the distance between them can be given by the formula AC square is equals to x1 minus x2 whole square plus y2 minus y1 whole square, or y2 minus y1 instead of y2 y1 you can write here y1 minus y2 whole square. x1 में से x2 को माइनस किया, जब मैं सेकेंड पॉइंट लिखूंगा मीन्स y1 माइनस y2, नो मैटर तुम चाहो सो यू कैन ऑल्सो राइट हियर 2 में से 1 को माइनस करो, सो इन द सेम वे y2 में से y1 को माइनस करो, कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। मेन रीजन क्या है कि whenever we are finding the square of any number, either it will be 2 minus 2 square और 2 स्क्वायर हो, हमें आंसर्स क्या मिलने वाले, +4। सारा कैलकुलेशन ओवर होने के बाद वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस साइड। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बार बार स्क्वायर रूट यूज करते रहेंगे, ये टाइम कंज्यूमिंग है। सो बेटर है पूरा कैलकुलेशन एज अ होल स्क्वायर कर लो, जब पूरा सॉल्व हो जाए तो लास्ट, ठीक है। सपोज पर्टिकुलर पॉइंट मीन्स मैंने यहाँ पे पॉइंट एग्ज्यूम किया, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट ले लिया, दैट इज पॉइंट एक्स, so it having some numerical value suppose 2 and 3 and the origin means O, so origin का coordinate तो हमेशा 0 0 ही होने वाला है, so O को मैंने x1 y1 सपोज किया, that is 0 0 and point x x2 y2 and that is 2 3। अब मुझे O और X के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, so can we write here x
1 minus x2 whole square plus, okay, remove the square root क्योंकि साइड ऑलरेडी स्क्वायर चला रहा है. So x1 minus x2 square plus y2 minus y1 और y1 minus y2 whatever you want to get from the beginning. So मेरा यहाँ पे x1 तो 0 है तो मैं क्या लूँगा 0 minus 2 0 minus 3 होगा. फाइनली क्या मुझे -2 का स्क्वायर प्लस माइनस and negative number is 4 plus 9 13. Since OX will be square root of 13. अगर यहाँ पे ध्यान दे तो ओरिजिन 0 0 होने की वजह से फाइनली वो वैल्यू से एलिमिनेट हो जा रहा है. तो जब वो वैल्यू से एलिमिनेट हो गया यानी अगर हम चाहे तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन डायरेक्ट लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. जो भी जीरो वाली वैल्यू है उसको हटा के डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो. सपोज मुझे 2 और 3 है, सेकेंड पॉइंट 0 है तो सेकेंड. सो अगर मैं सेम कैलकुलेशन इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना चाहूँ तो मेरे पास x2 तो x2 y2 इसको मानता हूँ और इसको x1 y1 मानता हूँ. तो मुझे OX स्क्वायर क्या मिलने वाला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. जहाँ पे x1 और y1 और तुम बोल सकते हो x2 या y2 कोई भी 0 0 तो डायरेक्ट यही हुआ ना कि जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करो x में और जो नंबर y में उसका स्क्वायर करो बाद में पूरे का लाके स्क्वायर रूट. कोई डाउट इसके अंदर? नहीं सर. ओके अब एक्सरसाइज का आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन. हाँ अक्षय यहाँ पे पॉइंट्स के कुछ नाम दिए हैं. किधर सर? ये 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख तुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिया है पेयर दिया है. कोई पॉइंट्स का नाम तो नहीं दिया ना अल्फाबेटिकल ABC ऐसा कुछ भी. So let A will be the point of x1 comma y1. We are assuming this one as a 2 comma 3 and the second point B we are taking as a x2 comma y2 that is 4 comma 1. Now we have by the distance formula AB square is equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So we having the value of x2 is equals to 4. So we are using x2 as a 4 minus x1. x1 is 2 plus y2. So y2 is 1 minus y1. y1 is 3. So 2 square and this side minus 2 square.
So this side AB is equals to root of 8. Now root of 8 can be written as 4 into 2 and the square root of 4 is 2. So final answer is 2 root 2. Okay, now let's see question number third. So in the same way we are assuming here C is equals to x1 comma y1, that is a comma b, then d is equals to x2 comma y2 minus a minus b. So by the distance formula we have CD square is equals to x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square. Now we have value of x2. So x2 we having minus a, so here minus a, then in between minus sign, then we have to write the value of x1, that is a, plus y2, so y2 is minus b, y1 is b, minus minus plus, and the greater sign will be carry. So finally we have 4a square plus 4b square. Now we can take 4 common. So a square plus b square, then the square root of CD. That means we will get the value of CD. 4 root a square plus b square. So final answer is 2 root a square plus b square. So in question number 2, we will use the formula from the origin. So distance from the origin is square root of x1 square plus y1 square. And if you want, you can also use the formula of distance between the 2 points, where the first coordinate is 0 0. So 36 square plus y is 15 square. Now the square of 36 is 1296, and the square of 15 is 2 to 5. So 5.21, that can be written as 31 into 31. So distance between two town is 30, it's a 39. 39 into 39. Distance between two town is 39. So in question number third, collinear points. Collinear points means if all given points lies on a line. So we are taking first point as a, second point as a B, and the third point as a C. यानी तीनों पॉइंट्स अगर एक लाइन के ऊपर हुए तो ही हम बोलेंगे कि these given points are collinear. Now we can prove the given points are collinear by using the distance formula. If all these 3 points lies on a line, so that means the sum of distance between the 2 points A to B plus B to C will be equals to AC. So let's find the distance between these 3 points. So first we will calculate the distance between the point A and B. So we are writing directly as a
We are assuming B as a x2, y2. So 2 minus 1 plus this side minus 2 square. So 1 plus 4. So AB is root 15. Sorry, root 5. Now in the same way, find the distance between the next 2 points. So let's BC square is equals to, we are taking C as a x2. So minus 2 minus 2 whole square plus point of y2 is minus 11, then point of y1, that means B 3, minus 14 whole square 16. Square of 14 is 196. So 196 plus 16 will be 2 9 1 10 212. That is BC. Now the third part. Okay, now see here. So now we have calculated the distance between all the points. That means AB, this one is the BC, and this one is the AC. Now, as we discussed in the beginning, the distance of the